Welcome back to this session. Today in this session, we'll be solving more numericals on cantilever beam and find its shear force and bending moment diagram. So let us get started with the first numerical. Now, in this first numerical, the diagram of the cantilever beam is given. So for this cantilever beam loaded in such manner, we need to find its shear force and bending moment. So let us get started and see how we can find shear force and bending moment for cantilever beam loaded in this manner. The diagram is given. So let us start by finding its reaction first. Reaction, right? So for a cantilever beam, I will only have RA. So RA will be equal to total load on the beam. Total load on the beam is equal to 2 plus 1 into 4. So this will come equal to 6 kilonewton. Right, now let's find the shear force. Number 2, shear force calculation. So force at A will be equal to RA. So remember, for shear force, bottom to top plus, top to bottom minus, right? So we have RA which is going from bottom to top. So RA will be going like this, bottom to top. So this is positive, and we got RA equals to 6 kilonewton. And is there any force in between here? There is no force, so we have RA equals to 6 kilonewton only. So now let us find force at C and left hand side to C. So left hand side कहाँ पर होगा? ये डायरेक्शन पे. So लास्ट फोर्स कितना मिला था? 6 किलोन्यूटन मिला था, और आगे कोई फोर्स है बीच पे, A और C के बीच पे कोई भी फोर्स नहीं है. So C तक भी 6 किलोन्यूटन है. और उसके बाद let's find force at C, right hand side of C. So right hand side of C is this direction. So the last force that we got is 6 kilonewton. Now there is exactly 2 kilonewton load acting on top of C. So it is coming from top to bottom, so it is minus. So 6 minus 2, we have 4 kilonewton. I have not considered this UDL because UDL will be 0 only, because अभी सिर्फ C पे शुरू ही हुआ है, तो उसका distance will be 0. So let us now find force at B point. Okay, so force at B should come equal to 0. So let us see. So it will be last force that we got is 4 minus UDL 1 kilonewton per meter load is coming from the top. So it is minus 1 और उसका distance 4 मीटर. So C से B तक UDL कितने पे चला है? B तक पहुंचते पे 4 मीटर चला है. So it is equals to 4. So 4 minus 4 is equals to 0. So we have no force acting at B. So it should come equal to 0. So we got 0 kilonewton. So now with this, let us draw shear force diagram. So we'll have shear force diagram equals to, at A we got 6 kilonewton. So here we have 6 kilonewton, and at C to the left hand side also we got 6 kilonewton. So let's join the line, 6 kilonewton. Now at C to the right hand side, at the C point only, when it is going to this direction, it is decreasing and becoming 4 kilonewton. So we have 4 kilonewton at this point.
राइट, और बी पॉइंट पे यहाँ पर 0, सो ये लाइन यहाँ से 0 के लिए जाएगा, ज्वाइन होगा. सो दिस इज माई ए, बी and C point. So this is all positive. Let's shade. So this is your shear force diagram. Now similarly, let us find bending moment also. So third we have bending moment calculation. So in bending moment, for a cantilever beam, free support पे moment 0 होंगे. So moment at B will be equal to 0, right? अब हम cantilever के लिए कैसे आएंगे? From right to left जाएंगे, right? So फिर हमारे right पे कितना है? We have moment at B which is equals to 0, moment at C point. So moment at C will be equal to, now ये UDL कैसे जाएंगे? C की तरफ ऐसे जाएंगे, और ये कौन सा डायरेक्शन हुआ? क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज माइनस. सो -1 into 4 into 4/2 इतना आएंगे, और ये कितना होगा? इट इज कमिंग इक्वल टू -8 kilonewton meter. Next, moment at A. Moment at A will be equal to, अब ये फोर्स भी ऐसे ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे जाएंगे, और दूसरा फोर्स ये 2 किलोन्यूटन पॉइंट लौटाएंगे, ये भी ए की तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे जाएंगे. तो फिर व्हाट डू आई हैव? फर्स्ट आई हैव -1 into 4 UDL इंटू उसका डिस्टेंस आधा पे लगेंगे, तो 4/2 प्लस, अब यहाँ से मुझे ए तक जाना है, तो कितना डिस्टेंस बचा? 3 मीटर. सो ये यहाँ पर हम प्लस करके लेके जाएंगे, +3. नेक्स्ट आई हैव अ 2 kilonewton load which is going in a clockwise direction, so -2 into distance is 3 from C to A. So this will come equal to 26 kilonewton meter. Right, now let's draw the bending moment diagram. B point पे 0, then C point पे we have -8 यहाँ पर, और A point पे -26. This is minus here, so -26 kilonewton meter. So let us join. So I have a bending moment in negative. This one is 26 kilonewton meter. Here is 8 kilonewton meter. Let's shade it. So this is your bending moment diagram. So I hope this numerical is clear. Let us solve the second numerical for today's session. So let us read its statement given. A cantilever beam of 1.5 meter long is loaded with a UDL of 2 kilonewton per meter, running over a length of 1.25 meter from the free end. It also carries a point load of 3 kilonewton at a distance of 0.25 meter from the free end. Draw SFD and BMD. So in this case, the diagram of the beam loaded with the load is not given, but a statement is given. So reading this statement, we first have to find out how long is the beam, and then what are the different types of load coming on the beam and at what distance. So let us get started. Cantilever beam is there, so one end is fixed, other end is free, right? And what is the total length of the cantilever beam given? It is given equal to, from here to here, 1.5 meter long. मेरा free end ये point है,
So let me name this point as A and this B point as my free point. अब फ्री पॉइंट से 1.25 मीटर तक 2 किलोन्यूटन पर मीटर का लोड लग रहा है. सो यहाँ से मैं यहाँ तक मैं इतना डिस्टेंस I'll keep it as 1.25 meter. Okay, and इसका इंटेंसिटी कितना है? Intensity of this UDL is 2 kilonewton per meter. So now next, what is given? It also carries a point load of 3 kilonewton at a distance of 0.25 meter from free end. अब ये फ्री एंड से 0.25 मीटर के डिस्टेंस पे 3 किलोन्यूटन पॉइंट लोड लग रहा है. सो आई कीप इट हियर पॉइंट लोड. सो 3 किलोन्यूटन पॉइंट लोड और ये डिस्टेंस कितने पे है? 0.25 मीटर. ओके, एंड व्हाट एल्स इज गिवन? This is it, right? So now from here we need to draw shear force and bending moment diagram. Now we need to draw shear force and bending moment diagram. Let us draw. Before we start, अब ये distance कितना होगा? Remaining distance, यहाँ से यहाँ तक का distance, यहाँ से यहाँ तक का distance will be coming equal to 1.5 minus 1.25. It will be coming equal to 0.25 meter. Up now I also have to know, because I'm gonna name this point जहाँ पर point load लग रहा है, मैं I'm gonna name this point as point C. C point. Okay. अब यहाँ से यहाँ तक का distance कितना है? अगर यहाँ से यहाँ तक का 1.25 था तो यहाँ से यहाँ तक 0.25 है. सो 1.25 माइनस 0.25 किया तो ये 1 मीटर आएंगे. ये कहाँ से कहाँ तक? C से ये पॉइंट तक. सो आई एम गोना नेम दिस पॉइंट एज D पॉइंट हियर. ओके, A, B, C एंड D. D से C तक 1 मीटर है और D से B तक 1.25 मीटर. ओके, सो लेट अस find shear force and bending moment diagram for this cantilever beam. Okay, so now first let us start by finding its reaction. Number 1, reaction, right? So we have only one reaction, which is RA here. So RA will be coming equal to total load on the beam. So total load on the beam कितना है? 2 kilonewton per meter UDL into 1.25 plus 3 kilonewton point load. So this will be coming equal to 5.5 kilonewton. Okay. Similarly, now let us find the shear force calculation. Okay, so my RA is coming equal to 5.5 kilonewton. Now for shear force, RA will be going from bottom to top. So bottom to top is positive. So force at A will be equal to RA, which is equal to 5.5 kilonewton. Now let's find force at D and left hand side of D. D का left hand side यहाँ पर होंगे, right? तो कितना है? लास्ट फोर्स हमें 5.5 मिला है. अब A और D के बीच पे कोई फोर्स है? There is no force in between A and D. So I have 5.5 kilonewton only. Now D का राइट हैंड साइड पे हम फाइंड करेंगे. सो D के राइट हैंड साइड पे कितना होगा? फोर्स एट
D and right hand side of D will be coming equal to, last force that I found is 5.5. अब यहाँ पर UDL शुरू ही हुआ है तो D पॉइंट पे UDL शुरू हुआ है तो उसका डिस्टेंस क्या है 0. सो UDL लग रहा है -2 इंटू उसका डिस्टेंस 0. सो ये भी 5.5 किलो न्यूटन ही रहेगा. नाउ फोर्स एट C एंड उसका लेफ्ट हैंड साइड पे, फोर्स एट C लेफ्ट हैंड साइड ऑफ C. सो लास्ट फोर्स हमें कितना मिला 5.5. अब D से लेकर C तक UDL चला है और कितना डिस्टेंस के लिए चला है, D से C तक 1 मीटर तक चला है. सो 2 into 1 meter. So this will be coming equal to 3.5 kilonewton. Okay. Now similarly force at C right hand side direction, इधर के डायरेक्शन पे फाइंड किया तो force at C right hand side will be coming equal to 3.5. अब C के ऊपर एक पॉइंट लोड लग रहा है 3 किलो न्यूटन, तो ये हम राइट हैंड साइड पे कंसिडर करेंगे. सो -3 माइनस UDL भी है 2 किलो न्यूटन पर मीटर. UDL 0.25 मीटर के लिए चल रहा है और अभी C पॉइंट पे शुरू ही हुआ है तो उसका डिस्टेंस 0 रहेंगे. सो वी हैव 2 into 0, राइट. सो दिस विल बी कमिंग इक्वल टू 0.5 किलो न्यूटन. अब ये जो लास्ट पॉइंट है B पॉइंट पे हमें 0 मिलना चाहिए. सो लेट अस सी. Force at B will be equal to last force that we got is 0.5 minus there is a UDL acting 2 into अब उसका डिस्टेंस 0.25 तक चला है. सो 0.25 और इसको आप माइनस करेंगे तो इट विल बिकम इक्वल टू 0.5 माइनस 0.5 which is equals to 0. So we get a exact value and this value here is right. Okay, so now let's draw the shear force diagram. Okay, so at A I have 5.5, D also I have 5.5, and to the right hand side when it is going it is same, remaining same. This is 5 kilo Newton or 5.5 kilo Newton. Let us draw in the line. Next, अब D के C के राइट हैंड साइड डायरेक्शन पे, सो ये पॉइंट पे कितना आ रहा है 3.5 रिड्यूस हो रहा है तो यहाँ पर पहुँच के इट इज़ बिकमिंग 3.5 किलो न्यूटन. और C के राइट हैंड साइड डायरेक्शन पे फिर से रिड्यूस हो रहा है और कितना हो रहा है ये 0.5 पहुँच रहा है. तो ये पॉइंट पे लेट्स टेक 0.5 किलो न्यूटन. लेट्स ज्वाइन. यहाँ से यहाँ तक जाने के बाद रिड्यूस हो रहा है और इसके बाद 0.5 हो रहा है और B पॉइंट पे 0. सो ये पॉइंट पे 0 here. This is my A, B, C and D point. ये सब पॉजिटिव पे है. Let's shade it. So this is my shear force diagram. Okay, now last one, let's find bending moment calculation. Bending moment calculation. Now for a cantilever beam free support पे moment 0 होंगे. So free support कौन से support पे है, B पे है. So moment at B will be equal to 0. Now ये moment at C find करने के लिए I have this UDL acting. So ये UDL कैसे जाएंगे, यहाँ पर 2 किलो न्यूटन UDL लग रहा है तो ये UDL ऐसे जाएंगे C के तरफ. So ये कौन सा डायरेक्शन होगा, clockwise direction. So moment at C will be equal to -2 into, अब डिस्टेंस कितना तक चला है 0.25 into 0.25 divided by 2. So moment at C will be coming equal to 0.0625 kilonewton meter. Okay, now similarly moment at D, ये पॉइंट पे फाइंड किया तो moment at D will be equal to, अब यहाँ से
B से चलकर D तक जाना है, तो ये जो 2 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड है हम यहाँ से यहाँ तक कंसिडर कर सकते हैं। फुल लेंथ के लिए, जो लेंथ 1.25 मीटर के लिए, वो सब हम कंसिडर कर सकते हैं। और ये कैसे जाएंगे, ये ऐसे ही जाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और ये जो पॉइंट लोड है ये भी ऐसे जाएंगे, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे। सो फर्स्ट लेट मी टेक द UDL विच इज -2। अब उसका डिस्टेंस चेंज हो रहा है। डिस्टेंस कितना हुआ, 1.25। B से लेकर D तक उसका डिस्टेंस 1.25 मीटर पे है। सो 1.25 इंटू 1.25 डिवाइडेड बाई 2 UDL का हो गया। नेक्स्ट आई हैव अ पॉइंट लोड विच इज गोइंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो -3 इंटू डिस्टेंस कितना है अभी, C से लेकर D तक 1 मीटर है, सो इंटू 1। So this will be coming equal to 4.5625 kilonewton meter. Okay, so now हमें लास्ट यहाँ पर A पे फाइंड करना है। So moment at A will be equal to, अब हमें दो ही लोड है यहाँ पर, एक ये पॉइंट लोड है और एक दूसरा ये UDL है। तो UDL कितने पे चला है, B से D तक 1.25 मीटर पे चला है, और बाकी रिमेनिंग 0.25 को हमें डिस्टेंस को ऐड करना पड़ेगा। सो हाउ डू यू डू दिस, इट विल बी इक्वल टू -2 इंटू 1.25 इंटू 1.25 divided by 2 plus the remaining distance 0.25 UDL का हो गया। अब पॉइंट लोड की करेंगे। पॉइंट लोड की विल बी इक्वल टू 3 इंटू, अब यहाँ से डिस्टेंस, यहाँ से C से A तक डिस्टेंस कितना है, यहाँ से C से D तक 1 मीटर है, तो D से A तक 1.25 मीटर, सो डिस्टेंस इज 1 प्लस 0.25, so it will be 1.25 meter. So this will be coming equal to 5.9375 kilonewton meter. Okay, now let's draw the bending moment diagram. B point पे 0, C point पे 0.0625 किलोन्यूटन मीटर, और D पॉइंट पे, ये पॉइंट पे 4. So इधर I'll mark it here, 4.5625 किलोन्यूटन मीटर, और A पॉइंट पे I have 5.9375 kilonewton meter. Let's join the lines. थोड़ा ऐसे जा रहा है, उसके बाद पैराबोला होके जा रहा है, उसके बाद ये पॉइंट पे थोड़ा सा ऐसे जाएंगे। ओके, आई वेंट a straight line, it will not go straight line in this manner. Okay, so this is in negative, all of it. Let's shade it. So this is your bending moment diagram. I hope this numerical is clear. Let's solve the third numerical for today's session. So for this, the diagram of the beam is given, and for this cantilever beam we need to find the shear force and bending moment diagram. So let us calculate and see how we can find shear force and bending moment for this question. The diagram is given, so let us start by finding its reaction. Number 1, reactions. So I'll have only one reaction, that is RA here. So RA will be equal to total load on the beam, which is 20 plus 10 into 1.5.
so this will come equal to 35 kilonewton. So RA is coming equal to 35 kilonewton. Okay, now let us find shear force. Number 2, shear force calculation. Now in shear force we have force at A. ये point पे I have a reaction RA which is going from bottom to top. So from bottom to top, if it is going from bottom to top, it is positive. So we have positive 35 kilonewton at A. Now force at C, left hand side. C का left hand side ये direction पे कोई भी force नहीं है, तो last force कितना मिला था 35 kilonewton, तो वो 35 kilonewton ही रहेंगे. Now force at C, right hand side direction, ये डायरेक्शन पे. सो ये डायरेक्शन पे जाने पे C के ऊपर 20 kilonewton लोड लग रहा है, तो ये हम राइट हैंड साइड पे कंसिडर करेंगे. तो कितना आएंगे, लास्ट फोर्स 35 मिला था और 20 kilonewton लोड ऊपर से आ रहा है, तो -20 माइनस यूरियल भी लग रहा है वो राइट हैंड साइड की डायरेक्शन पे. सो 10 kilonewton पर मीटर. अब उसका डिस्टेंस कहाँ से शुरू हुआ है, अभी सी पॉइंट पे शुरू ही हुआ है, तो ये उसका डिस्टेंस 0 रहेंगे. So into 0, this will come equal to 15 kilonewton. Okay, next we have at force at B. अभी यहाँ पर यूरियल चल के यहाँ तक गया है, तो उसको 0 आना चाहिए क्योंकि फ्री एंड पे कोई भी लोड नहीं लग रहा है, तो 0 आना चाहिए. Let us see if we get 0 or not. Force at B will be equal to last force that we got is 15 minus we have a UDL which is 10 into, and अभी B तक पहुंचने पे ये UDL कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है, 1.5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है. So its distance will be now 1.5 meter and this will be coming equal to 0. So we have exactly 0 at the end, so this numerical is correct. Now let us draw the shear force diagram. Okay. Now force at A, ये point पे 35 kilonewton आया है, C पे भी 35 kilonewton आया है. So ये कितना है, 35 kilonewton. Let's join. Okay. Force at C point पे, ये C point पे जब right hand side पे जा रहा है तो उसका decrease हो रहा है, ये 15 kilonewton पे पहुंचा है अभी 15 kilonewton. So let's join here 15. Now B point पे पहुंचते पहुंचते it is becoming 0. So here 0, right? So this is positive. Let's shade it. And this is a shear force diagram. I have point A, point B and point C, right? Now let's find bending moment diagram. Third one, bending moment calculation. So for bending moment, कैंटिलीवर के लिए फ्री एंड पे मोमेंट 0 होंगे. सो मोमेंट एट B विल बी इक्वल टू 0. ना मोमेंट एट C विल बी इक्वल टू, ये पॉइंट तक कहाँ से जाएंगे हम, राइट से लेफ्ट आएंगे. सो B से C पे आएंगे तो एक ही लोड आ रहा है और वो ये UDL लोड आ रहा है, तो C की तरफ कैसे जाएंगे, ये डायरेक्शन पे जाएंगे. और वो डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन हुआ, clockwise direction, and clockwise direction is negative. So I have minus 10 into, उसका distance is 1.5 into, to act at half of 1.5, so 1.5 divided by 2. So this will be coming equal to 11.25 kilonewton meter. Okay, so similarly moment at A will be equal to, अभी ये पॉइंट तक आना है, एक लोड कौन आएंगे, एक UDL, दूसरा ये पॉइंट लोड. अब ये पॉइंट लोड A की तरफ कैसे जाएंगे,
ये डायरेक्शन पे, और ये डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो आई हैव नेगेटिव देयर. सो यहाँ पर क्या होगा, इट विल बी माइनस UDL, that is 10 into 1.5 meter into, it will act at 1.5 divided by 2 plus, यहाँ तक हम पहुँच गया. अब A तक जाना है, UDL तो यहाँ तक ही है. अब बाकी का डिस्टेंस जो 1 मीटर है, we will add it up here. So plus 1. Okay. So next I have 20 kilonewton load going clockwise direction. So minus 20 into the distance is 1 meter. So this will be coming equal to minus, this is minus here, minus 46.25 kilonewton meter. So now let us draw the bending moment diagram. So moment at B is 0, moment at C coming minus 11.25, and moment at A minus 46.25. Join it to go like this. Now from here थोड़ा सा ऐसे होकर जाएंगे. Okay, so this is 11.25 kilonewton meter, and here I have 46.25 kilonewton meter, and this is all in negative. So this is your bending moment diagram. So I hope this numerical is also clear.